Hello students, in this series of video lectures, we are focusing on previous year JEE Mains questions. Let's see another question. Locus of the centroid of the triangle whose vertices are a cos t, a sin t, b sin t minus b cos t and 1, 0 where t is the parameter is. So we have to find the locus of the centroid of this triangle. As we do in all locus problems, सबसे पहले हम assume करेंगे let the coordinates of, or we can say let the centroid be h, k. तो हमें इस पॉइंट h, k का लोकस फाइंड आउट करना है. सो फ्रॉम आवर नॉलेज ऑन द सेंट्रॉइड वी नो दैट h की वैल्यू क्या आएगी, a cos t plus b sin t plus 1. We'll add the x coordinates, or we'll add the abscissa of the 3 points and divide them by 3. This will give you the value of h. Similarly, we can find k as a sin t minus b cos t plus 0 over 3. अब हमें ये जो एक्स्ट्रा पैरामीटर आ रहा है हमारा t, इसको एलिमिनेट करना है इन दोनों इक्वेशन से, सो दैट वी गेट एन इंडिपेंडेंट इक्वेशन इन h एंड k. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, विल गेट 3h माइनस k इज इक्वल टू a cos t प्लस b sin t. Simplifying second equation, we get 3k as a sin t minus b cos t. So अगर हमें इन दोनों इक्वेशन में से t को एलिमिनेट करना है तो उसका मेथड क्या रहता है, that we'll square both sides and then add. Let's do that. We'll get 3h minus 1 whole square plus 3k whole square is equal to a cos t plus b sin t whole square plus a sin t minus b cos t whole square. Simplifying it further, we get 3h minus 1 whole square plus 3k whole square is equal to a square cos square t b square sin square t plus 2ab sin t cos t plus a square sin square t b square cos square t minus 2ab sin t cos t. These two terms will get cancelled out and we'll be adding this. So we'll get a square sin square t plus cos square t will be 1, and similarly we'll get here b square. On the left hand side we'll get 3h minus 1 whole square plus 3k whole square. So now this is an independent equation in h and k. What we'll do is we'll simply substitute h and k to x and y. We'll get 3x minus 1 whole square plus 3y whole square is equal to a square plus b square. That is the equation of required locus. Let's see our options. So our answer will be option number 3. Let's take a look at another question. If the equation of the locus of a point
equidistant from the points a1 b1 a2 b2 is a1 minus a2 times x plus b1 minus b2 times y plus c is equal to 0, then c is equal to, we have to find the value of c. So let's do it. Let the point be ph comma k जो a1 b1 a2 b2 से equidistant है. So applying distance formula, we'll have h minus a1 whole square plus k minus b1 whole square will be equal to h minus a2 whole square plus k minus b2 whole square. हम यहाँ पे अंडर रूट नहीं लगा रहे because that will cancel out from both sides. Simplifying, we'll get h square a1 square minus 2 a1h k square b1 square minus 2 b1k equal to h square a2 square minus 2 a2h plus k square b2 square minus 2 k b2. h square cancelled out, k square cancelled out. इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर, ये जो a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं. माइनस a2 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2a1h को राइट हैंड साइड में लेके आए तो बना 2a1h. दिस इज प्लस 2b1k माइनस 2a2h minus 2b2k. We'll have now h times 2a1 minus 2a2. We'll now have 2 times a1 minus a2 times h plus 2 times b1 minus b2 times k is equal to a1 square b1 square minus a2 square minus b2 square. Simplifying further, we get 2 times a1 minus a2 times h plus 2 times b1 minus b2 times k plus a2 square minus a1 square. इन सारी टर्म्स को हम वापस एक की तरफ ले आए प्लस b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट स्टेप में हम 2 कॉमन लेते हैं. सो वील गेट a1 माइनस a2 टाइम्स h plus b1 minus b2 times k plus half of a2 square minus a1 square plus b2 square minus b1 square is equal to 0. Now if we compare this with our given equation, we can clearly see that the value of c is half a2 square plus b2 square minus a1 square minus b1 square, that is option second. Alright, let's move on to next question. A and B are the vertices of triangle ABC. If the centroid of the triangle lies on the line 2x plus 3y equal to 1, then the locus of the vertex C is. अब हमें इस वर्टेक्स सी का लोकस फाइंड आउट करना है. जिसका भी लोकस फाइंड आउट करना हो उसको हम एज्यूम कर लेते हैं. लेट दैट पॉइंट बी h कॉमा k. सो इन दिस केस वील एज्यूम लेट सी बी h कॉमा k.
अगर अब C के कोऑर्डिनेट्स h, k हैं तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स विल बी 2 प्लस माइनस ऑफ 2 प्लस h बाय 3 कॉमा minus 3 plus 1 plus k by 3. That is a standard formula. x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. So simplifying this further, we have the corners of g as h by 3 comma k minus 2 by 3. अब हमें given है that this centroid lies on the line 2x plus 3y इज इक्वल टू 1. तो इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन को सेटिस्फाई करवाएंगे. सो वील हैव 2 टाइम्स h बाय 3 प्लस 3 टाइम्स k माइनस 2 बाय 3 इक्वल टू 1. So now this is an independent equation in h and k. We can straightforward replace h and k with x and y to get the required equation of locus. So we'll have 2x 3y, 3 into minus 2 is minus 6, and these 3 as LCM will go to the right hand side. So we have 2x plus 3y is equal to 9 as the required locus. Let's see our options. 2x plus 3y is equal to 9. Third option is the right answer. So I hope you have understood these problems. We'll look at more problems in the next video.